IEEE Microwave Theory and Technique Society, USA 2019. Research Advisor, Nell Yang Academy of Sciences, Singapore. Associate Editor, IEEE Access 2018. Associate Editor, Advanced Electromagnetics 2018. Invited speaker at 9th National Frontiers of Engineering and Symposium for Young Indian Engineers, organized by Indian National Academy of Engineering, IIT Jodhpur 2015. DST Fast Track Research Grant for Young Scientists 2007. Postdoctoral Research Fellowship, Tohoku Institute of Technology, Sendai, Japan. Research Fellowship, Indian Institute of Technology, New Delhi. MHRT Fellowship, University of Allahabad, and many more. He has served as domain expert in the form of the member NET peer team, Union Public Service Commission, New Delhi, Bihar Public Service Commission, Patna, member National Jury, SEMC, India International Science Festival, member Engineering Sciences, DST Inspire Fellowship Review Committee, Punjab Public Service Commission, Chandigarh, Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar, external expert, BOS, ECE, NIT Kurukshetra, member Academic Council, DIT Dehradun, and I think many more committees are waiting for him. IEEE सोसाइटी एक्टिविटीज, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि IEEE जो होता है हमारा, ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, उसका मोटो भी मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ है, इंजीनियरिंग फॉर ह्यूमैनिटी. He has been the chairman, IEEE Microwave Theory and Technology Society, UP section 2020 to 22, treasurer IEEE Roorkee subsection 2016-17, faculty advisor IEEE MTTS IIT Roorkee student branch chapter, member executive committee IEEE Uttar Pradesh section, member Conference Quality Control Committee, IEEE UP section, convener Student Activity Committee, IEEE UP section, vice chairman IEEE Microwave Theory and Techniques Society Uttar Pradesh chapter 2013 to 2015 and 2019 till date. मेरे ख्याल से इतना हम लोग समझ ही चुके हैं अभी तक कि उनका जो रिसर्च एरिया है वो मिलीमीटर वेव, टेराहर्ट्ज, integrated circuits or systems or sensors पर है. He has been the reviewer in a numerous number of the international journals. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, IEEE Microwave and Wireless Component Letters, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE Photonics Technology Letters, IEEE Sensor Journal, IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurements, Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, International Journal of RF and Microwave Computer Aided Engineering, IETE Journal of Research, Electronic Letters. He has attended MTT sponsored number of conferences and participated. IEEE IMS 2019-18, APMC 2016-2004, URSIGA 2011-2005, IMARC 2013, 2014, 15, 16, 17, 19, AEMC 2015, APACE 2014, IEEE 10CON 2016. He has been the member of Conference Executive Advisory and Steering Committees, near about 11, and he has chaired the conference sessions in more than
10. He has organized the workshop and seminar at the national and international level around 8. And course, he has developed the courses for UG and PG at IIT Roorkee. I would like to cite them: RF and mixed signal circuits, new BTech curriculum, communication systems and techniques, optical communication, microwave millimeter wave integrated circuits. He has taught a number of courses at IIT Roorkee. In addition to teaching and research, he has number of administrative responsibilities shouldered in the at IIT Roorkee. Head Department of Electronics and Communication Engineering, Chairman Department Research Committee, Warden Wellness, Chairman Department Research Committee, Member Department Administrative Committee, Member Institute Research Committee, Coordinator IIT Roorkee Cultural Festival, Sponsor 2050, Member DRC, Member Academic Review Committee, in charge Wireless Communication Laboratory and RFIC Research Laboratory since 2007, Faculty Advisor ECE Cognizance 2012, in charge Examinations, Member Department Purchase Committee, Member Department Academic Program Committee, Member Coordination Committee for Manpower Development in VLSI, Member Institute Library Advisory Committee. Sorry. Excuse me, Madam, I would request please to wind up and invite Professor Pathak to deliver his talk. I think he is probably waiting. Okay, sir. So we extend our warm welcome to Professor Pathak. Please accept our welcome and oblige us. Over to Professor Nagin Pathak ji. My screen is visible to you? Yes, sir. It's quite visible to all of us. So, good afternoon to all of you. And thank you, Professor Garima, for giving detailed introduction about my work, etc. This talk is more related to the new education policy. So what are the various objectives of new education policy? What are the challenges? What reforms they are needed? How we have to change our mindset? All these things they were discussed at the time of formation of new education policy, and then with enormous contribution from experts of various domains, this education policy was formally accepted by Government of India in 2020. So basically, the objective was how to transform our education from a stage where our knowledge was merely focused towards a bookish knowledge. Students, they were finding difficult when they are coming out from their academic institutions, whether it is before graduation, that is at school level. Sometimes it is not possible for few students to complete their school education as well, or going to higher education. And if someone has completed graduation,
and coming out from educational institution wants to go ahead with the opportunities to earn and shape their future, it was very difficult for them, because whatever was taught, whatever was introduced, whatever they learned in the classroom or in their academic curriculum, somehow there was a gap between the requirement when they are coming to the market, when they are coming to the society, and whatever they were taught during the classroom education. So this policy was framed and the aim was to fulfill that gap. So the slide, are you able to see next slide? So next slide, it is the first slide only, transforming education. Slide number 2 we are seeing on the screen is now. I'm not able to change the slide. Yeah, now it's fine. You, sir, yeah. May I request you to switch on your video also? I think it will be better to connect. Thank you. See, I'm switching off my video so that less connectivity problem, right? Okay. So it states that the National Education Policy 2020 is a comprehensive framework for education reform in India, aiming to transform the country's education system to meet the needs of 21st century. What is the need of 21st century? What is the objective of education? That is the major question. So if you go back to our ancient educational system that was followed in ancient India, you see that each scholar, they were given some kind of skills. They are able to develop some kind of skills, and those skills, they were natural. Their natural tendency to acquire more and more knowledge in that particular domain or that particular skill. So that was the form of the education. But the difference was in older system, not the ancient one. Older means prior 2020, prior new education policy, that somewhere we were forcing our kids, our students to adopt a particular path, a particular way of learning. So sometimes you can say rote learning, that they are mugging up, they are just going through the textbooks, but what they will do after coming out from them, because they have not developed skills. If they are able to develop the skills, it would have been fulfilled the goal. And because of that, the problem, major problem, the society was facing, government was facing, is the employment opportunities. You know that our population is very large. We are having a very vast population, a large number of youth we are having. They need jobs, opportunities to earn. And those jobs cannot be provided by government alone. So if government cannot provide the job, where they will go? And we are not providing them or helping them to develop their skills so that they can, instead of becoming job seekers, they can become job providers. So that particular part was missing from our educational system. And since most of our students coming out from educational institutions, they were job seekers, and there were no jobs other than government sector, or very few or very little job available in the private sector, there was a gap, and there was a large gap between the available jobs and available manpower. And it was creating a big difficulty for policymakers. So
in order to fulfill this gap, this new education policy was framed so that we can promote the tendency among our own students so that instead of becoming job seekers, they can become job providers. That is the core idea behind promoting the Startup India concept. Startup India concept, let us try to motivate our youth to become job providers rather than job seekers. The moment they are becoming job providers, the next outcome is there will be Make in India, developing India, because you need a lot of manpower to fulfill your dream. It means you have to manufacture things here. So all those things, they are automatically linked with that. So we will discuss in later slides how this new education policy was framed and how it is linked. All these components, they are linked to the core concept. So another issue our educational system was facing, that most of the time we forget about our duties. We want to get something from the society, but we never think about to return back to our society. We are having some responsibilities towards our country, our nation. If someone is engineering, studying engineering, so they don't feel that they should also learn about other subjects which are related to the social sciences, because they feel that we are engineers, what we will do with that? We are scientists, what we will do with that? That was creating a gap when those kids or those students, they are joining society because they are living in the society. Societal needs, they are cut off. They don't have feeling for that. But we have to frame our educational system in such a way so that our students, they should know what are the rights, what are their rights, but apart from right, they should also know what are their duties and how they have to give up something to their society, their nation. They have to fulfill the need of their own countrymen. So how they can contribute towards that, that is equally important. So not only taking from the society, rather giving back to the society, that is equally important. So this new education policy, there you can find different aspects of this general thought, that is build a society which is in true sense, members of the society, they know their rights, their duties, and they have a strong affection and bond towards their nation so that they can develop their skills, knowledge, etc. through their education and give back to their society, national level as well as international level or global level. So they can become, in true sense, a global citizen. So these following aspects are involved. Number one, equitable and vibrant knowledge society. Orientation towards rights, duties, and values. This is very, very important, because if you only talk about our rights and we are just omitting the concept, our duties, our responsibility, then that is not going to help in any way. Develop global mindset by instilling skill and values in education. Value education is very, very important, because what we are missing from, especially from our kids, our students in the society, we see that it is
somewhere moral values, there is a degradation, fall in the moral values. I remember that earlier there was saying that in rural India, people don't use locks in their homes. घर बंद नहीं होते थे. But now you cannot imagine that there was a society where there was no need to have locks. So why this is happening? Because we are not insisting to have morality in the society. We are losing our ground, which was Indian society was very high, was having very high moral ground. Somewhere we are losing that. So this NEP is an effort to regain our confidence and our hold towards morality, moral values. As a citizen of India, as a citizen of any society, or as a global citizen. Key principles of this NEP, they are summarized in this slide. So this is basically holistic development of a student on cognitive as well as conceptual parameters by use of technology and innovation. So how to use modern technology, how to use new ideas to transform our society. See, one point you can see that students' holistic development, then flexible learning environment. Our learning environment was very, very rigid. If there is an exam, there is a set pattern, you have to ask questions like that. There was no flexibility at all. No flexibility at curriculum level, no flexibility at delivery level. You have to deliver the lectures as per this schedule. Only these points you can discuss. You cannot go out of the syllabus, all those things, because we have not given flexibility. We removed the flexibility. You are eligible to work in this area provided you have earned this degree. If you don't have this degree, you cannot work. See, when I was a BTech student, one of our former vice chancellor, he was invited to deliver a talk on Teachers' Day. I remember it was sometimes 1995 or so, and he was a great mathematician. So he asked a simple question. Kids, can you tell me what was the position James Watt was holding throughout his life? So we had no idea. As a student, we had no idea. Then he replied he was Dean of all College of Engineering and Sciences in England. But James Watt was not a doctorate degree holder. He was not even past matriculation. But he was a genius. So there is a continual debate whether we should only freeze or only focus towards the degrees, or we should also focus to our skills, innovations, ideas, whom we should give, say, importance. Degrees, they are important. There is no debate at all. But apart from degree, innovations, new ideas, knowledge, that is also important. And you cannot, say, restrict gaining knowledge without going to the college. These two things, they are different. A person may be knowledgeable without having proper education. And James Watt is one of the examples. So how that is possible? That is possible only if we are making our system more flexible. Give them opportunity. If someone is a 50-year-old and he wants to learn something in the area of medical science, he wants to learn. Why we should not give him opportunity? Why we are freezing that, okay, maximum age is 25 years or 26 years. After that, you cannot go for the study. How you can restrict? If you are restricting, it means you are basically
creating hurdle for those who wants to learn or who wants to contribute in that area, but they have not got opportunity earlier. So in order to remove all those hurdles, this NEP introduces a flexible system. And you can see that there is a point mentioned in blue headings, no hard separation between vocational and academics. You are good if you have earned BTech degree. You are good if you have earned PhD degree, but you are also eligible to get enrolled in some other type of education where you can learn all those things. And if you are performing, then you are equally good. It's not that only those who are having BTech degree, they are good, and those who are not having BTech degree, they are not good. If you want to learn electronics, there are various ways. One way, you can go through the regular educational programs. Other way, at later stage, anytime you want to learn, there are programs, maybe one month program, 2 month program. You want to learn a particular module, particular, say, area of that stream, that is also open to you. This will give you our members of our society more opportunity to think about their skills, their interests, and anytime they can enter into the educational system, get benefited from the educational system. Anytime they can come out from that, if there is any problem, they are not able to complete that course. Anytime they can come out, and anytime later they can enter. So those systems which were very hard boundaries, they are made flexible. That is the core idea. Then this is very, very important term, respect for diversity and local context. This is very important. So far, we were only talking about see what is happening in MIT, what is happening in Harvard, what is happening in Oxford, what is happening in Paris, what is happening in Muzaffarnagar. Nobody wants to talk about that. You are living in Muzaffarnagar, you don't want to solve the problem of Muzaffarnagar. That is the major problem, because you are not, say, ready to accept or try to find out solution for local problems. We will only introduce that if something is happening in United States or UK or Europe, that is good. There is no problem. And what they were doing, Harvard University, they asked their students to visit one of the remote villages of India, stay there for a month, see what kind of problems they are facing, come back, and then prepare a proposal to find out solution for that. They are adopting that strategy. We are adopting, we are more focused towards that. We were more focused towards that okay, they are doing, so that is the great. Now, through this NEP, this entire approach has been changed. We have to find out problems which our local people are facing, how to solve their problems. You are solving global problem, there is absolutely no issue. But who will solve the local problems? So these things need to be part of our curriculum. That is very, very important. See, this slide, you will see several say points which are mentioned here. Basically, implementation of vocational education in all. It says that how to implement vocational education in almost without any discrimination, all our educational institutions, whether they are IITs or simple engineering college or any other. See, one of the major problems which our society is facing, our kids who are in 12th standard, they are facing difficulty, and you may have seen a lot of suicide cases in Kota or other places where, say, these coaching institutions they are running.
they are under tremendous pressure. What they will do if they don't get admission in IIT? Why this type of madness in the society? See, engineering education is engineering education. If you have to learn physics, it is physics. Why there shall be any discrimination if you are getting degree from college A or college B or college C? How? Because college is just a building. The people or faculty members or the facilities which are available, that is important. So it means somewhere we have introduced discrimination among our institutions, discrimination in a way how we are introducing things. This NEP wants to break those barriers. See, if you are getting degree from Institute A or B or C, it doesn't make any difference. Ultimately, it comes how much knowledgeable you are. How this is possible? This is possible if all are joining hand together. If college A is not very having strong resources, but college B is having strong resources, what is harm if they both join hand together? So if that is possible, then this barrier may be demolished. We are able to demolish that barrier, and as a consequence, the stress condition among kids who are appearing for different examination, whether for medical entrance or engineering entrance, it can be reduced. So keeping all those things in mind, then NEP proposed that let us have implemented, let us try to implement this collaborative approach among institutions. So if there is an IIT, let IIT should collaborate with other institutions around that particular IIT. Because now it is 23 IITs are there, so almost major states, they are having one IIT. So NITs are there and other centrally funded institutions are there. So instead of keeping deprived our students from getting good education, it is better that let us open the door. If something is available at one place, we can ensure that that is available for others also. If a lecture delivered by a professor of good institution that matters, then why the same lecture cannot be recorded and made available to other students so that they can also get benefited? So that is the collaborative approach proposed in NEP. These slides, I think that will be available with you because I have, I think I was given time around 30 to 40 minutes. So I will bind up. See, these are a few important salient features for develop skill-based mainstream education system with indigenously developed content and curriculum and making it accessible to everyone by introducing different learning modes. For example, practice-based curriculum, skill gap analysis, open distance learning mode, exposure to vocational education, Lok Vidya, skill framework, vocational craft. So NEP 2020 offers opportunities for ASTP and members in the school. Say, for example, presently around 10,000 of 21,271 CBSE affiliated schools in India and 228 schools in 25 foreign countries covered under Samagra Shiksha. So there are various schemes government has launched, and one aspect that is the extend skill delivery to class 6 to class 8. There is a very good mission, Indian mission. So that is the National Skill Qualification Framework. So government has started this so that if someone miss the school education or more, then he or she should not get much affected, and
have some opportunity to develop some skill, get trained in particular skill, and can get some opportunity, job opportunity. So those type of things they are introduced. For example, National Skill Development Corporation has been given a role. Along with it, make a case of link between industry and academic institutions. Most of the academic institutions see there was no outlook. Only thing what you will become after graduation. I want to become IAS, I want to become PCS, I want to go to security forces or so and so. Only government jobs most of the time. But now this is a high time to change our outlook, that after coming out from academic institution, I want to start my own firm. I want to develop this particular product. It is beneficial for our society. So those change in outlook is needed, and this NEP fulfills that much needed effort from the government side. So this is a very, very good effort from the government side to provide opportunity for our kids, our academic institutions to rethink about their, say, overall outlook, that not only the government jobs, not only the white collar jobs, we have to respect for those who are actually working, ground workers, who are contributing, who are in true sense engineers, who are in true sense workers. It's not that those who are doing white collar job only they are respectable people. So you can, I hope you may be aware of the existing Pradhan Mantri Kausal Kendra. So there is a Kausal Vikas Yojana and a Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana. So there are several institutions they are opened, and where students can get training of one or two say vocational training of one or two subjects, or where they are basically interested or where they want to work. So those type of opportunities which were earlier not available, but now that is available because of the efforts of government through this NEP. So opportunities in higher education for ASTP after school training program. So UGC is issuing guidelines for apprenticeship embedded under higher education for all stream under credit scheme. Then after the school training program, and partners can engage in design and integration of skill component and mainstream education, train and provide pool of vocational facilities for higher educational institutions. ASTP can facilitate collaboration of members with universities and affiliated colleges as execution partners. Training partners can be facilitators as third party acting on behalf of corporate for apprenticeship, internship, etc. So main features of this new education policy, you can summarize that multidisciplinary and flexibility. So all aspects of education which is needed to become a good citizen, that need to be introduced rather than giving a only very small and very targeted education. For example, if you are engineer, it's fine that you are performing very well in your engineering discipline, but apart from that, you are also a citizen in the society or nation. So you have other responsibilities also, and you have to learn that. So that aspect, it means you cannot always say that you are electronics expert, so you will only talk about electronics. You don't have anything to do with biotechnology or chemistry or social sciences, etc. As a human, as a person, as a citizen, you need to develop skills in other areas as well. So that's why multidisciplinary and flexible system, educational system is much required, and this NEP provides that platform. This is another important feature of this NEP, which is academic bank of credit, that
you earn some credit that is deposited, and suppose you have discontinued or there is a gap in your education, again you want to join. So whatever you have earned, say 3 years back or 4 years back, that will be available with you, and you have to earn only, suppose you have earned 40 credits out of 100, and you have left the your program, and later you again restart. So you need not to start from 0. You will start from 41 credit and complete the 100 credits. So that is some kind of academic bank of credits. So your earned credits, they will be deposited. They will be available. Integrated bachelor's master's program, say you can have integrated BSMS or integrated MS and PhD, or in technology, or you can say that BTech, MTech, or MTech, PhD, or BTech, direct PhD. So this type of dual degree programs, they are promoted in this educational policy. Research orientation, there is an emphasis on inculcating research skills at the undergraduate level. This encourages a culture of critical thinking and problem solving. So earlier, UG level, especially UG level, we were more giving bookish knowledge. So now out of the box thinking need to be introduced even at the UG level, and not only UG level, at our school level also. National Research Foundation, this is another initiative of government through this new education policy that NRF is proposed, and that is also already passed by Parliament, and it will take place. Then teachers training and professional development. This is another initiative. Technology integration, autonomy and accountability. Higher educational institutions are encouraged to have greater autonomy in decision making, but they are also held accountable for the quality of education they provide. You may have seen this is a serious problem that many institutions, they basically, if there is no check and balance, if there's, suppose nobody is say having say observables etc. at any college level, and examination is conducted by university, so it should not happen that cheating is allowed, or without having examination, you are simply just asking students come and write those copies at any time, and that is deposited. So those things, unethical practice should not happen. And if someone is doing, he will held responsible, and there will be action. Otherwise, you are free to take decision, change your curriculum, the way you are teaching, all those things. So minimum from regulator side or from university side, minimum interference, but simultaneously you have to ensure that whether someone is acting as a watchdog or not, the situation will not get changed, and you will follow the same standard if someone is present or not absent. So that thing is very, very important, and that is emphasized that it is good that we are giving autonomy to educational institutions, but simultaneously they have to ensure that they will follow highest standards that is basically expected from any institution. Internationalization, that is another aspect, that instead of restricting our activities locally or within at national level, it is better that we can say spread our presence globally. So internationalization is another aspect. Regional language, this is very, very important aspect of NEP. Earlier, see, most of the education is given in only one language. That is, we know that English is the main language. But up to 12th standard, different state boards, they are using different languages. For example, UP board is using Hindi, and some other board is English, some other board is Bengali, or someone is Telugu, etc. But higher education level, most of the cases, you see that medium of instruction is English.
But now government is promoting that if at 12th standard, up to the 12th standard, you can use and teach everything in your mother tongue. Why can't you can go for this graduation and post-graduation level? Because unnecessarily those students who have who studied at in their mother tongue at 12th level, they have to go for say conversion of terms, etc., translation. So they face a lot of difficulty, and that is reflected in their thinking process as well as their personality. So in order to remove that and promote the natural thinking, natural talent, it is better that this option must be given, that if they are comfortable in their mother tongue, this is fine. Why one language? Why not other languages, regional languages, which are used by several states and citizens? They can be used. So that is the reason that government is promoting. I think initially it is 14 languages they are promoting. Specialized institutes and professional education. NEP recognized the importance of specialized institutes and professional education and encourage their growth and development. Then NEP recognized the importance of specialized institutes and professional education, right? So these features collectively aim to transform higher education in India, making it more inclusive, flexible, and aligned with the need of the 21st century. They are designed to produce graduates who are not only well-versed in their respective field, but also equipped with critical thinking, skills, and research capability. So these last few lines, they are the core of this NEP policy 2020. Thank you for your patient hearing. If there is any clarification needed, I would be happy. I would like to ask our participants if there any of them wants to interact with Professor Nagin. Thank you, Professor Nagin. A very lucid presentation, and in brief also, you have given on the national education policy. Thank you, ma'am. And I can understand how much precious time you all are having here, because the CV I saw on the website of the IIT Roorkee, when I saw that how much you are devoting there and dedicated faculties there and sharing the responsibilities of different committees of the administration too. So that is why I was citing all your features of your curriculum vitae, that young faculty must be inspired, that the senior professors are also shouldering the responsibilities at the institutional level. So that's why I was citing all of them, and it was very much interesting for me too, being a physics professor. So that is why I was in detail I was telling to all of them. Thank you very much, sir. May I ask you one favor also, that after this NEP faculty development program, may we get any sort of help in the DAV college for the skill development courses or skill development of the UG students, any sort of help from EICT Academy or any program, short-term program for the students also? Yeah, thank you. Thank you, ma'am, for your queries, and also thank you, Mr. Pathak, for very insightful and inspiring and your opinion and views for this NEP. Yeah, so for the skilling, we will get back to you. If you can tell us which program or courses you are particularly interested in, like which areas are of need or use for the faculty and the students at DAV college, and then we can work out a method of organizing a program at your institute. Sure, sir.
I will let Please, you know you please certainly. let us know. Please let us know like which particular program or one or two program that you would be interested in hosting. Because EICT Academy is mandated, and this is one of our objective to conduct upskilling and reskilling and industry-oriented learning and skilling for faculty members and graduates also. If you can tell us few areas, then we'll work out the details with you. Yeah. Sir, besides the faculty, I just want to for the students also, for the students of the UG and PG students, if there is any provision or there is any courses you take care of them, you attend, you pay attention to them. So for that is- students also, it's a Yeah. slightly different model. Like we faculty development programs are meant for or reorienting or upskilling or upgrading the knowledge of the faculty members, with the hope that these faculty members, when they learn something new or something which is in the industry-oriented, skill-oriented program, will then be able to introduce or integrate or kind of merge what they learned in the their actual teaching and labs and curriculum. And for students, we have a different way of working. If you can let us know, we will work out and we will touch with you. Okay, sir. Okay, sir. I will let you know soon, very soon, sir. Thank you. Yeah. Thank you, Sir Vinas. Would you like to address some? Yeah. So thank you. I mean, I don't have to say much. I just want to thank all the participants. I know there are quite a few participants offline also at your college, and we have many online too. And I am very sure that this must have been a very fulfilling and enriching, as well as enhancing your learning about NEP. Because if we can implement NEP in true spirit, then it will solve many of the issues and the challenges related to job apartment and making learning which is practical and also kind of relevant to our societal needs. And this also was stressed and also kind of highlighted by Professor Pathak too. So I hope that all of you have learned something and you'll be able to go back to your colleges, all the faculty members, and try to implement something or other component of this NEP, which is a very good document, and implementation is a challenge. But still, if each college or if each institute takes out few things which are of their need and implement it, it will be a wonderful thing. So thank you, everybody. And we do look forward to meeting any of the other faculty members. EICT Academy does a lot of programs, and particularly we are specializing programs in electronics and ICT domain. So if you have any requirement of programs in things like IoT or communication or electronics and ICT like data science, machine learning, 5G and all those areas, we do conduct these programs. Let us know. So thank you, everybody. And we also have a feedback form so that our coordinator at your college, Dr. Garma, will share with you. We'll get to know what your opinions were. But however, if you have any particular questions, feel free to ask. I would like to take one more minute of you because I have to introduce you to our audience that Professor Sanjeev Manhas is the principal investigator of E&ICT Academy and esteemed professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IIT Roorkee. His teaching research supervision area are circuits and VLSI devices, SRAM, CMOS devices, MEMS and sensors. He is an experienced professional, academic and R&D in nanoelectronics, VLSI semiconductors. He has managed and led the NEP Government of India funded FDP in E&ICT domain, and much more is there to tell about Professor Manhas. Thank you, ma'am. Thank you for the nice introduction, and we do look forward to hosting. If you can host more program, we'll be very happy. And regarding the student program, please get in touch with us. We have a way of conducting
programs also for students, but it's a slightly different model. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So, thank you. So if there's nothing else, thank you all. Thank you, ma'am. And thank you all the administration of DAV College. And we hope that we can be doing some other program in near future. Wish all the participants all the very best for their endeavors. Thank you. To the participant, I have to inform that one more lecture we are having from Professor K. Ratnam from the Ministry of Higher Education in the MP government, and he's the Deputy Director there. So one more, please stay with me before the valedictory to listen up to Professor Ratnam. So I am calling you to join because I was not certain at what time you will be able to join. So please stay with us. Our speaker of the valedictory session, Professor K. Ratnam, has joined us. I would like to welcome you. A brief introduction of Professor Ratnam is here. It is great pleasure to introduce an esteemed academic luminary, Professor Kumar Ratnam. With a wealth of knowledge and a stellar career spanning over several decades, Professor Ratnam's contribution to the field of history and academia are nothing short of extraordinary. Professor Ratnam has consistently demonstrated an unwavering commitment to the pursuit of knowledge throughout his life. His educational qualifications are truly impressive, including an array of degrees such as MA, MPhil, PhD, and GD, with specialization in history and ancient Indian history and culture.
His academic journey has been passed through prestigious institutions such as Rohilkhand University, Bareilly, Merit University, and CSM Kanpur University. With over 32 years of teaching experience, including 11 years as professor, he has left an indelible mark on the education landscape. His administrative and research prowess are equally remarkable, with 37 years of dedicated research and more than 100 published works. Currently holding the position of Additional Director in the Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, Professor Ratnam is also the Chairman of Board of Studies for History at Jivaji University, Gwalior. His influence extends to various committees and councils across the nation, including roles as an expert on several art, culture, music, and drawing activities. In addition to his impressive academic and administrative roles, Professor Ratnam has guided 36 research students in both PhD and MPhil programs, shaping the future of historical research. He has graced numerous international and national seminars, workshops, and conferences as a chairperson, subject expert, and resource person, sharing his vast knowledge and insights. Professor Ratnam's special achievements, including being an approved research supervisor in multiple fields and serving on editorial boards, demonstrate his dedication to promoting research and scholarship. His numerous honors for excellence in research, art, culture, and literature, as well as the education, underscore his significant contribution to the society. We are fortunate to have him with us, and we welcome him, and please accept our welcome, sir. And mic is over to Professor Ratnam now. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Should I continue? Yeah, certainly, sir. It's my proud privilege that is the most reputed institute of the Chaudhry Charan Singh University, DAV College, Muzaffarnagar, under the co-ship of this program of the IIT Roorkee. First of all, I say my regard to Professor Sanjeev Kumarji, the honorable principal of the college, and the very enthusiastic and good academics also. And my elder sister has been senior to me in the Institute of Advanced Studies in Merit, Professor Garmaji. And I have seen that Mr. Bipin Kumar is there. He welcomed me, and all the participants, faculty. Undoubtedly, it's a very important and the burning topic which we have discussed for the last week in the various point of view, national educational policy, challenges, implementations. Undoubtedly, the timing of this new education policy rather than the national education policy, when it was introduced, the entire world was suffering from the COVID. And in that time, our Honorable Prime Minister has given to the country in the national education policy that reflects what they want to change the scenario of and the mindset of the country in that period. So, मेरा कहने का तात्पर्य, I will talk in the mix. कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम देखते हैं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, किसी भी घटना के पीछे उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को सौंपी, उस समय समस्त वैश्विक वातावरण असंतोष, आक्रोश और असमंजस की ज्वाला में जल रहा था। उस समय इस देश को ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर आत्मनिर्भरता की बात कर स्पष्ट एक ऊर्जा का संचार
भारत के प्रधानमंत्री ने किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अच्छा, what is the main features of this education policy? Although that has also been discussed in the last few lectures, but as per my opinion and the understanding is concerned, that I see in the perspective that is the decolonization of the mind is the basic concept of this new education policy. मस्तिष्क का उपनिवेशवादी विमुक्तिकरण की दृष्टि का निर्माण करना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य ध्येय है, ऐसा मैं मानता हूं। तो स्वतंत्रता के बाद लगभग 6 दशकों तक हमने ये देखा कि जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था, जिस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था, जिस प्रकार की भारत के विभिन्न आयामों में प्रत्येक पक्ष में हमारी जो व्यवस्थाएं सॉरी स्थापित थी, वो सभी की सभी हमारी औपनिवेशिक व्यवस्थाओं पर आधारित थी। भारत में शिक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व था, लेकिन लगभग 150 से 200 वर्ष के पूर्व किस प्रकार से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने उसको राज्य आधारित कर दिया, राज्य के अधीन कर दिया, राज्य की व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित होने वाली एक व्यवस्था के रूप में शिक्षा को, जो हमारे यहाँ भारत में विद्या थी, विद्या को शिक्षा बनाकर रोजगार से छूट दिया। तो इस प्रकार के जो डायमेंशन थे, इस प्रकार का जो स्कोप, जिस प्रकार के जो सिस्टम थे, इस प्रकार के कैरिकुलम थे, जिस प्रकार के अगर से एवोल्यूशन सिस्टम था, जिस प्रकार का यूनिवर्सिटी सेटअप था, एज वर बिफोर द इंडिपेंडेंस, एज वर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इस प्रकार से कहीं भी हमारे मानस पटल पर एक भारतीयता का बोध और भारतीय ज्ञान परंपरा को कहीं परिलक्षित करने में असफल रहे और हम औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित रहे। तो इस डीकोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है, जैसा कि अभी G20 में से पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम जब भारत की 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे स्वतंत्रता की, कोई भी उपनिवेशवादी चिन्ह, कोई भी विचार, कोई भी ऐसा दृष्टि जो उपनिवेशिकता, गुलामियत या हमारी भारतीयता से दूर हो, को समाप्त करेंगे। उसी दृष्टि से हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा की एक नीति का ड्राफ्ट हमको दिया गया। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर हियर द ड्राफ्ट इज इन द मोर देन 6,000 pages. What there are more than 200 times the word history, philosophy and the culture is there in the draft that reflects the religion, the history, philosophy and culture is the soul of the country that must come in the education system. भारत की संस्कृति हो, भारत के दर्शन हो या भारत का इतिहास हो, इसको केंद्र में रखकर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का निर्माण किया गया। क्योंकि I have to discuss, I have to focus upon the research finding agencies. So in the light of the demand of the new education policy and the implementation and the challenges as far as concerned, I would like to say all the participants and the faculty are well aware of that. There are so many agencies to promote the research in the country, in the universities as well as in the institution or the colleges. इस प्रकार की जो हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जिसको हम ICHR के रूप में जानते हैं, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसको हम ICSSR के रूप में जानते हैं, भारतीय विज्ञान परिषद हो, भारतीय वैज्ञानिक परिषद हो, भारतीय अभियंत्रिकी परिषद हो, there are several agencies, those are funding agencies to promote the research in the country. Apart from the UGC itself an autonomous organization and funded to the colleges and the research promotion. But in the light of the new education policy, as far as the concern of the ICHR, where I has been a member and the member secretary board for the last, I have consulted with the more than 8 years there in the ICHR. So before this NEP, there was open platform. आप किसी भी प्रोजेक्ट पर किसी भी तरीके से
हम अपना प्रस्ताव भेजते थे, चाहे रिसर्च प्रपोजल हो, चाहे पब्लिकेशन हो, चाहे सेमिनार्स हो, रिसर्च प्रमोशन से जुड़े हुए जितने भी फंडिंग्स थी। लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद हमने थ्रस्ट एरिया बनाए, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षा के अनुरूप इसी प्रकार से सारी काउंसिल्स में, जो ICSSR, ICPR में भी मेंबर सेक्रेटरी में रहा, उसमें भी अब हम एक थ्रस्ट एरिया जो भारतीयता का बोध हो, जिसमें भारत के सैद्धांतिक दर्शन, आध्यात्म से संबंधित ऐसे विषय। कारण क्या है कि हम इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं देखता हूं कि हमको इतिहास जो परोसा गया, पढ़ाया गया, वो कहीं ना कहीं एक दिल्ली सेंट्रिक था या एक वेस्ट सेंट्रिक था, जिसको देखकर हमको लगता था शायद दिल्ली का इतिहास ही भारत का इतिहास है। हमको पराजय का इतिहास पढ़ाया गया, हम कहाँ कहाँ पिटे, किस युद्ध में हारे, हमारी असफलताओं के कारण 1857 की क्रांति की असफलताओं के कारणों पर हम विश्लेषण करते थे। जबकि भारत दिल्ली नहीं था, भारत अटक से लेकर कटक तक का एक समग्र विहंगम, एक सांस्कृतिक जीता जागता राष्ट्र है, जिसको लाइफ इज नॉट विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो इस प्रकार की जो हमारी अवधारणाएं थी, मान्यताएं थी, वो पाठ्यक्रमों के माध्यम से टूट रही हैं, शोध के टूट रही हैं। तो शोध के माध्यम से भी जो हमारी रिसर्च एजेंसीज हैं, उनमें इस तरीके के प्रस्तावों को, हमें उन एजेंसीज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उपादेय बनाने के लिए किस प्रकार से हमारे चैलेंजेस उसमें आते हैं, किस प्रकार से हम रिसर्च से पहले क्लासरूम में हम जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन अध्यापन करते हैं, नए पाठ्यक्रम आते हैं, तो आज हम इतिहास के रूप में, अगर मैं इतिहास की चर्चा इसलिए करूंगा, इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो हम केवल अकबर, बाबर, हुमायूं या कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री को नहीं पढ़ा सकते। अब हमको बताना पड़ेगा कि कौन से साक्ष्य, कौन से अभिलेखागार, क्या क्या नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, स्टेट आर्काइव्स है, म्यूजियम्स है, किन म्यूजियम में हमारी क्या उपलब्धता है। आज डिस्टेंस मोड का जमाना है, हम आज देख रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर पूरा पाठ्यक्रम हमने आभासीय मॉडल से किया। तो इन सारी चीजों को, जो हमारे सामने एक चैलेंजेस हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, सबसे बड़ा चैलेंज मेरा मानना है कि हम आज तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझ नहीं पाए। समझ इसलिए नहीं पाए कि ना तो हमने उस 65 पृष्ठ की पुस्तिका को पढ़ा जो उसकी समरी है, ड्राफ्ट को 6000 पृष्ठ का पढ़ने का समय नहीं है। हमने अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रेम्बल को भी पढ़ लिया होता, तो हमारे सारे चैलेंजेस जिनको हम आज उठा रहे हैं, आपस में शेयर करते हैं, टीचर्स कुछ मुझसे शेयर करते हैं कि साहब इस तरीके का बना दिया, एक फर्स्ट पेपर को सिलेक्टिव कर दिया, दूसरे को ये कर दिया, इस तरीके की चीजें नहीं आती, हम सारी चीजों को समझते। तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज है कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ हैव टू वी कम ओवर विद दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन सारी चीजों को लेकर जब हम समग्रता के साथ विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जो आज हम देख रहे हैं कि एक सामान्य सी घटना हम मान रहे हैं, राष्ट्र उत्साह के रूप में मना रहा है, महोत्सव मना रहा है कि हम चांद पर हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, सफल लैंडिंग हो गई, सूरज की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। तो ये रिसर्च के ही परिणति हैं, ये 1-2 दिन में होने वाले कार्य नहीं है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के साथ वर्तमान में वातावरण, वैज्ञानिकों के साथ, साइंटिस्ट के साथ, उनका मनोबल को लेकर, उनके आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर, उनके संसाधनों को लेकर जब हमने उपलब्धता को मुक्त हाथों से किया, तो कार्य करने की क्षमता का वातावरण निर्मित हुआ। इसी प्रकार से जो कभी भी एग्जिट कर सकते हैं पाठ्यक्रम से, कभी भी आ सकते हैं, 1 वर्ष पढ़ने पर हम डिप्लोमा ले सकते हैं। आज सौंदर्य का विद्यार्थी अभियांत्रिकी पढ़ सकता है, अभियांत्रिकी का विद्यार्थी प्रबंध पढ़ सकता है, प्रबंध का विद्यार्थी राजनीति पढ़ सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमने बड़ा घालमेल कर दिया, हम किसी में पारंगत नहीं होंगे।
लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हम स्वरुचि के विषयों का अपने एकेडेमिया के साथ जब जोड़ेंगे तो स्वतः ही एक इस प्रकार का मन बनेगा जिसको पढ़ने में एक कुछ परिणाम परक परिस्थितियां आएंगी। और जैसा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ग्लोबल सिटीजनशिप की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा कहीं ना कहीं इंगित होती है। तो इन सारी चीजों को लेकर हम समग्रता के साथ जब चलेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसा समग्र ग्लोबल एकेडमिक एटमॉस्फेयर हम कंट्री में बना सकेंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये पॉलिसी बीच में आई थी, अम्ब्रेला पॉलिसी रिसर्च फंडिंग्स की, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों को भागना पड़ता है, रिसर्चर्स को भागना पड़ता है। उसके लिए एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया जाए जिसके अंतर्गत सारी रिसर्च फंडिंग्स जितनी एजेंसीज हैं उसमें एक चेयरपर्सन हो, उसमें एक काउंसिल हो। अभी तक हम कह देते हैं हिस्ट्री काउंसिल में अगर पॉलिटिकल साइंस के किसी विद्यार्थी ने कोई प्रपोजल भेज दिया, कहते नहीं इट इज नॉट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत सारी एनईपी में जो है उसकी दृष्टि से हम इसको समाप्त करके रिसर्च फंडिंग्स में भी आज आवश्यकता है कि अब एक अम्ब्रेला पॉलिसी के अंतर्गत एक समग्र संस्था के रूप में ऐसी अनुदानित संस्थाओं को स्थापित किया जाए। इस समय इसमें शासन क्रियाशील है। तो इस सारी परिस्थितियों में हम अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का जो प्रारंभिक दायित्व था वो राज्यों का था। राज्यों ने उसको आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद हम उसको अब हमारे शिक्षकों पर, हमारे संस्थानों पर, हमारे विश्वविद्यालयों पर, हमारे महाविद्यालयों पर आज ये दायित्व है कि वो उसको लेकर किस प्रकार से उपाधि बनाए, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन उसकी मूल भावना के अंतर्गत हो। आज हम नेक के एक्रेडिटेशन से पहले हम चिंतित होते हैं, शोध पत्रों को इकट्ठा करते हैं। आज डिजिटलाइजेशन का समय है, क्यों नहीं हम प्रत्येक कॉलेज में ये कर देते व्यवस्था कि कोई भी अगर शिक्षक किसी सेमिनार में जाएगा तो आवेदन के पास लौटने के बाद मैं प्राचार्य जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस ओर, जब वो वापस आए तो अपना शोध पत्र, अपना प्रमाण पत्र उस आवेदन रिलीविंग के साथ महाविद्यालय में दे और तत्काल आईपीएससी को डिजिटलाइज करने के लिए उसको अपने अभिलेख के रूप में संग्रहित किया जाए। तो वो जो बाद में भगदड़ मस्ती है, हम विभागों से कहते हैं, विभाग अपने विभाग के अध्यापकों से, शिक्षकों से, प्राध्यापकों से कहते हैं, तो एक स्थिति निर्मित होती है। तो एनईपी में डिजिटलाइजेशन, डिस्टेंट मोड, ओडीएल, रिसर्च, अपग्रेडमेंट, सिलेबस, इन सारी चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से 4 खंडों में विभक्त करके किया गया है। तो उन सारी चीजों को हम समग्रता के साथ जब विश्लेषित करेंगे, आत्मसात करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी मन स्थिति, हमारी इच्छा शक्ति, जब हम उसमें कुछ सकारात्मक करने के मस्तिष्क का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ उपादेय होगा। अदरवाइज हम एक व्यवस्था के अंतर्गत, हम एक परंपरा के अनुसार अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे केवल इस उद्देश्य से कि हमको उसके में वेतन मिले, समय से वेतन मिले। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा हमारी भारत के आध्यात्म पर, भारत की ज्ञान परंपरा पर, भारत की औपनिवेशिक विमुक्तिकरण पर, इस पर आधारित एक लंबी परंपरा के आधार पर ये व्यवस्था स्थापित हुई है। तो रिसर्च फंडिंग्स का जहां तक सवाल है, हम प्रपोजल्स बनाएं। जब भी हम कोई प्रपोजल बनाएं तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मापदंडों के अनुसार, क्योंकि हम कोई भी जिस राष्ट्र से किसी प्रकार का अनुदान लेते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम राष्ट्र और समाज के लिए उपादेय हो, ना कि हम केवल एक लाइब्रेरी पीस बनाकर उस अपने प्रोजेक्ट को जमा कर दें, उसका यूटिलाइजेशन जमा कर दें, यूसी जमा कर दें। एनईपी में बड़ा स्पष्ट संकेत है, जब तक कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर हमारे रिसर्च पेपर का नहीं होगा, साइटेशन नहीं होगा, उससे हमें संतुष्टि मिल जाएगी, एपीआई बढ़ जाएगी, हमारा पेपर है, लेकिन राष्ट्र और समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य राष्ट्र को केंद्र में रखकर
उस राष्ट्र को जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, उस राष्ट्र को जो आध्यात्मिक राष्ट्र है, उस राष्ट्र को जो भौगोलिक सीमाओं से आच्छादित नहीं है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम जब अपने किसी भी शोध प्रस्ताव को निर्माण करें तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र के लिए उपादेय होगा, राष्ट्र के लिए एक कहना चाहिए लाभ। पर आज ये इंडक्शन कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, तो मेरी बड़ी बहन मेरी बहुत सीनियर हैं गर्मा जी, उन्होंने जिस तन्मयता से गंभीरता से इन विषयों का चयन किया, मैं देख रहा था पूरी लिस्ट, और कितने बड़े बड़े रिसोर्स पर्सन आए हैं यहाँ पर। तो एक हम केवल अपने प्रमोशन के लिए इसका एक मानकर और आज इसका समापन ना कर दें, इसको निश्चित रूप से इसमें मिले हुए मूल्यों को, इसमें मिले हुए विचारों को, इसमें मिले हुए हमें एकेडमिक जो इनपुट मिले हैं उनको कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में क्लासरूम तक पहुंचाए, उस क्लासरूम से समाज तक जाएंगे, समाज से राष्ट्र के लिए उपादेय होंगे। तो इस प्रकार से मैं तो अब पिछले 10 साल से चूंकि एक प्रशासक की भूमिका निभा रहा हूँ, मेरी बहन ने बहुत बड़े बड़े शब्द मेरे लिए कहे। मैं एक सामान्य सा मेरठ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, बहुत विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरठ मेरी आत्मा में बसता है। अभी भी मेरी आयुक्त महोदय की बैठक चल रही है, उसके बाद 3 से मेरी दूसरी एक मीटिंग है मेरे अवर सचिव महोदय के साथ। बहन का आग्रह था, मैंने उनके मान के लिए अपना ये समय चुरा लिया, बहुत अधिक ना बोलते हुए, क्योंकि पहले डिक्टी में वैसे भी सब फेडअप होते हैं सुन सुन के। अब फिजिकल होता है तो अब इसमें पहले डिक्टी में आनंद आता है, हम इंटरेक्शन कर पाते हैं, कुछ पूछ पाते हैं, फिर भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है जिनके मन में कोई भी ऐसा इशू हो, तो मैं अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसका कुछ संतुष्टिपूर्ण जवाब दे सकूंगा, ऐसा मेरा निवेदन है। ओवर टू प्रोफेसर गर्मा जी। थैंक यू सर, आपने इतना समय भी निकाला, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगी विपिन जी आप थोड़ा सा कुछ बोलिए, प्रोफेसर साहब के साथ कुछ इंटरेक्शन आपका होना जरूरी है। विपिन जी। अरे विपिन तो बहुत इंटरेक्ट करता है, रात भी उसने बहुत मेरी जान खाई है। दादा जो जाना। विपिन जी, प्रोफेसर विपिन कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अभी आप म्यूटेड हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। जी दादा नमस्कार, हमारे महाविद्यालय के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं महाविद्यालय की तरफ से पूरे स्टाफ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए प्रदान किया, बहुत अच्छा लगता अगर आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित होते और आप साथ में इंटरेक्शन होता तो बहुत ही आनंद कुछ और होता। भाई बड़ी बहन का आदेश था तो मुझे आना तो था ही, और फिर आप लगातार कह रहे थे बहन भगत पे भाग जाते हो, दादा भाग में जाना। बहुत है वैसे बहुत थोड़ा बहुत, और हम बहुत आभारी है, इतना समय भी आप चुरा पाए। जैसा मैडम ने कहा, वास्तव में हम बहुत आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दादा। हालांकि आपका शेड्यूल हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, कि वो उनका EICT वालों का थोड़ा सा ये था कि वो बिल्कुल उसी समय पर चाह रहे थे। नहीं तो दीदी बहुत अच्छा हुआ, 3 बजे तक मेरी कमिश्नर की मीटिंग थी, मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। आपकी मीटिंग चल रही थी तो वो इसलिए आपके लिए मैनेजेबल हो गया, बीच में निकल पाना, अदरवाइज हम समझ सकते हैं आपकी व्यस्तताएं। मैं प्रोफेसर मुकेश वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? प्रोफेसर वंदना वर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगता है आपको जब भी सुनते हैं। आज मैं आपको सुनने के लिए फ्री होके बैठी, मैंने कहा पहले सर को सुन लें, आपकी नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा होती है सर हर टॉपिक पे। कुछ नहीं, मैं तो हो गया मैडम, 10 साल से पढ़ाई लिखाई सब छूट गई है। लगता नहीं सर आपके लेक्चर सुन के ऐसा ऐसा लगता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर सुन के। आप धन्यवाद। आ रहा हूँ तो मिलूंगा आप लोगों से। जी बिल्कुल सर, मैं तो यही चाहूंगी कि कभी आप आए यहाँ पर, तो ऑफलाइन भी आपका कोई प्रोग्राम हो, जल्द कराएंगे सर हम लोग। अपनी बहन को इस स्नेह के लिए।
तो वंदना भी चाहती है, विपिन जी भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, तो जरूर ऐसा अवसर मिलेगा कि आप हमारे लिए समय निकाल सकेंगे। कला उत्सव में बुलाते हैं मैम हम सर को, तो तब भी सर ऑनलाइन ही आते हैं। इस बार ऑफलाइन का ही करेंगे कुछ। हाँ तो आएंगे पर्सनल विजिट मैं जरूर आऊंगा मैडम फ्राइडे जी में। जी बिल्कुल सर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। कुछ डॉक्टर चारू, चारू जी। जी दीदी। जरा सर नमस्कार। रत्नम सर नमस्कार। चारू जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं परिवार में आ गया। जी सर हमें खुद आपको देखकर इतना अच्छा लग रहा है सर कि गरिमा दीदी ने बहुत अच्छा ये प्रयास रहा उनका कि सबको जोड़ लिया। और बहुत बहुत सर आपका आभार कि आप आए हमारे महाविद्यालय। अब मैडम से ये रहेगी हमारी दरख्वास्त के ऑफलाइन भी बुलाए आपको सर। नहीं, मैं आऊंगा, बगैर बुलाए आऊंगा। बुलाए घर पे, बगैर बुलाए आया जाता है। जी सर बहुत अच्छा लगा सर आप आज। मंजूषा जी भी कुछ कहना चाहती है। मंजूषा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम नमस्ते सर, नमस्ते। जय हो, आपकी जय हो, जय हो। आपका फोन भी पिक नहीं कर पाता हूँ कई बार, क्या बताऊं। सॉरी। बस रहने दीजिए सर, आपको जितनी बार बुलाते हैं आप उतनी बार धोखा दे देते हैं। ये मेरी अकेले की शिकायत नहीं है, देखिए। सर बिल्कुल यही शिकायत सबकी, के बाद नहीं पा रहे किसी से सही से। अरे बहुत लड़ती है मेरे से, बहुत लड़ती है मंशा। रत्नम आपके साथ यहाँ पर कितने लोग दिल से जुड़े हुए हैं, इस बात का वो है, इस बात का है कि सब लोग चाह रहे हैं आपको कि आप सिर्फ ऑनलाइन नहीं। हाँ सर, मुजफ्फरनगर का एक चक्कर, मुजफ्फरनगर का एक राउंड जरूर होना चाहिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर का एक चक्कर यहाँ लगना चाहिए। हाँ दीदी, एक करते हैं सर के लिए कुछ। नहीं, कुछ मत। तो बड़ी बहन का जब भी आदेश होगा बिल्कुल आऊंगा मैं। मतलब छोटी बहन के आदेश पे नहीं आएंगे आप? छोटी बहन की अनुग्रह पे, सॉरी आदेश नहीं, अनुग्रह। बड़ी छोटी कर सकते हैं ना। मतलब हम बुलाए तो आप ना आए। प्रोफेसर संजीव कुमार बॉटनी से आप सर कुछ कहना चाहेंगे? प्रोफेसर साहब बड़ा रेगुलरली अटेंड किया है कल्पना मैडम। प्रोफेसर संजीव कुमार जी, कल्पना जी, रीना जी, डॉक्टर रीना खतौली। संजीव कुमार जी कुछ हाँ मैडम जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार प्रोफेसर साहब। मैडम बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा बोले लोग, सभी लोग बढ़िया बोले। लेकिन एनईपी में जहां टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का यूज आना चाहिए। हम बस फर्क इतना है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें रेगुलेट करे। पहली बात तो ये। जैसे प्रोफेसर साहब ने गागर में सागर में संक्षेप में सारी बातें कह दी हैं, ऐसे ही आपने भी कह दिया है कि हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना है। वी हैव टू लिव इन देम। हमें अपने हाथ में लगाम रखनी है उनकी, ना कि खुद उनके गुलाम बन जाना है। अब जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ने बड़ा, सभी यूनिवर्सिटी प्रचलन कर रही है, सारे कॉम्पिटिशन्स प्रचलन कर रहे हैं कि एमसीक्यू होना चाहिए, एमसीक्यू होना चाहिए। एमसीक्यू एक लिमिटेड प्रक्रिया है जो कि आंसर को भी लिमिट कर देती है, फिक्स कर देती है इवन दैट, और क्वेश्चंस को फिक्स कर देती है, और उसको एक्सप्लोर करने का कोई तरीका नहीं है। आपने हर चीज बाउंडेड कर दी, हर चीज घेरे में कर दी, सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए। ये कंसेप्ट या ये अप्रोच बढ़िया नहीं है। इससे क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट जो बात करते हैं एनईपी में हम लोग, जो राइटिंग स्किल है वो खत्म हो रही है, और जो इमेजिनेशन पावर है उस पर भी क्वेश्चन मार्क जा रहा है। हम लोग सोचना ही नहीं चाहते, ओरिजिनली थिंकर जो थे वो सब खत्म होते जा रहे हैं। सिर्फ जो हमें टेक्नोलॉजी बताएगी हम उसी के गुलाम बनते जा रहे हैं। इस चीज का जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा आपने विषय रखा है संजीव जी। ये आप तो वनस्पति शास्त्री हैं और बॉटनी में तो आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा।
आपने जैसा कहा ना, टेक्नोलॉजी का यूज आपको करना है, आपका यूज बॉटनी में तो कम से कम टेक्नोलॉजी आपका यूज नहीं कर पाएगी। तो आपकी जो चिंता है वो विषय के परिवेश में बड़ी कहना चाहिए पवित्र चिंता है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं विस्तार से कभी बैठेंगे तो इस पर बात होगी, क्योंकि एक्सप्रेशन को कहीं पर भी रोका नहीं गया है। ऑब्जेक्टिविटी है, अनडाउटेडली ऑब्जेक्टिव आदमी कब होगा, अनटिल अनलेस सब्जेक्टिव आपका माइंड में क्लैरिफिकेशन, माइंड का क्लियरिटी नहीं होगी, तो आप कहीं भी उस सब्जेक्टिव को के बगैर नॉलेज के आप ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव की बात की आपने की, लेकिन सब्जेक्टिविटी से हम नहीं बच सकते। ये अच्छा है आपका चिंता विषय, और अपने कक्षा में आप सर मैं एक बात साइंस से एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी बताएं। हमारे यहाँ 1950 में ये डिस्कवरी आई थी कि प्लांट का जेनेटिक मटेरियल डीएनए जी 1950 में, उस समय एमसीक्यू इसी पे बना होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद 1970 में ये आया कि नहीं, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। जी अब इसका मतलब एमसीक्यू का प्रारूप बदला कि डीएनए भी है और आरएनए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चलते चलते सन 2000 में ये आ गया कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल है। डेफिनेटली जी। अब जो बाउंड्रीज एमसीक्यू ने बनाई थी चेंज हो गई, सारी चेंज हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञान को किसी बाउंड्री में मत बांधिए, उसको इमेजिनेशन पे चलने दीजिए और उसको एक्सप्लोर होने दीजिए। आप देखिए ना, एनईपी का जो मूल कहना चाहिए आत्मा है वो इसी पे है, कहीं किसी को बांधना ही नहीं है। आप कभी आइए, कभी जाइए, कभी पढ़िए, किसी को पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, क्या भी पढ़िए। नहीं मैं सर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। नहीं, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए आप जो है कि आपको बांधना कहाँ है। आप अगर सब्जेक्टिव हुए, मैंने कहा ना, आप ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते। आपने जितना डीएनए से लेकर और प्रोटीन तक की चर्चा की, इसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फाइंडिंग्स कहीं ना कहीं आई होंगी। केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ऑब्जेक्टिव आधार पर कोई रिजल्ट नहीं आता है। डाटा कैन नॉट फाइनलाइज द शेप ऑफ द रिजल्ट until the discussion and the discourse. So how can say that the objectivity is there? When the objectivity is there, then the subjectivity must be there. Until the subjective discussion. My meaning is, सर मेरा सिर्फ मतलब कहने का ये था, टेक्नोलॉजी ज्ञान को बंधन में ना बांधे बस। मैंने आपके उसको पहले ही स्वीकारा और आपको बधाई दी, और मैंने कहा ये पवित्र चिंता है आपकी। I do agree with you, प्रोफेसर संजीव जी। लेकिन अच्छा है इस बात को होना, मैं खुद इस चीज का पक्षधर हूँ कि किसी भी टेक्नोलॉजी का, वैसे भी हमारे यहाँ तो शास्त्रोक्त है कि विज्ञान का गुलाम नहीं होना चाहिए। उस समय विज्ञान की धारणा थी, उस समय प्रौद्योगिकी नहीं थी, लेकिन आशय यही है कि हम उसका सकारात्मक उपयोग करें। आपका चलिए अच्छा है, बड़ा विस्तृत है, क्योंकि 2:34 हो गए, 2:45 में मुझे 3:45 पे दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना है। मैं उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्राचार्य जी का और श्री गर्मा जी का, जितने भी जूनियर्स हैं जो लगातार जुड़े हैं। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है दोबारा हम मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस की लाइब्रेरी में पहुंच गए। के लिए बहुत बहुत है, मंजूषा है, सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक्स देने के लिए मैं अपने हमारे आज कार्यवाहक प्राचार्य हैं प्रोफेसर मुकेश चांद जी, उनको इनवाइट कर रही हूँ कि वो आपका ऑफिशियल थैंक्स करेंगे। मैं क्वेश्चन हेलो जी सर, जी सर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर रत्नम जी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर। रियली आपका जो ये इम्प्लीमेंटेशन एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पॉसिबिलिटीज ऑफ रिसर्च फंडिंग एजेंसीज, जो आपने टॉपिक दिया बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और एक जो फैकल्टीज हैं उनके लिए एक बहुत अप्रोचिंग टॉपिक है। स्पेशली NEP पे तो सभी डिस्कस करते आ रहे हैं। हमारे इस 8 दिन के प्रोग्राम में काफ़ी कुछ लोगों ने कहा है, NEP के बारे में समझाने की कोशिश की है, बल्कि अभी भी
ऐसा इतना समझाने के बावजूद भी कुछ थोड़ा अधूरापन सा लगता है कभी कभी। लेकिन जो मैं मानता हूँ, जो पॉसिबिलिटीज ऑफ रिसर्च फंडिंग एजेंसी का मसला है, ये बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी रिसर्च कोऑर्डिनेटर हूँ MSU का, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का। इसमें थोड़ा जो हम लोग कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस फंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, और टीचिंग लोड कह लो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरा खाली सजेशन है कि इसमें हम लोग थोड़ा सुधार देखें, डिस्कस करें बैठ के कहीं भी। और आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा रहा, आपने वास्तव में बहुत अच्छा बोला, और आपने स्पेशली समय दिया हम लोगों के लिए, ये सबसे एक अहमियत वाली बात है। और हम आपसे आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमको इसी तरीके से अपनी इस नॉलेज के साथ ज्ञान देते रहेंगे, और हम अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस 8 दिन के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के आखिरी दिन आपने जो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया, बताया, वास्तव में आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी टीम DAV कॉलेज आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इस प्रोग्राम से संबंधित तो कल भाई प्रोफेसर संजीव कुमार जी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं हो रही हमारे पास महोदय। करा रहे जी प्रोफेसर साहब। मुझे बोलना है, वहाँ खड़ा होकर बोल दीजिए। हाँ बोलो, मुझे वहाँ मजा आएगा। मुझे मजा सही नहीं आ रहा है। आइए प्लीज प्लीज। आप लोगों ने इतना काम किया। हेलो, अरे सुशील जी पहले सब देख लो। respected Professor Garima ji, coordinator of 8 days faculty development program on effective implementation of National Education Policy 2020, challenges and possibilities, organized at DAV College, Muzaffarnagar, with the collaboration of Electronics and ICT Academy, Roorkee. Dr. Sandeep Tripathi, Dr. Akshay, Mr. Amit, Mr. Sushil ji. Really, this college is very much thankful to you all. The team organized this program, and it was really very, very fruitful for the faculty of DAV College as well as who attended this program online as well. Faculty Development Program, संकाय विकास कार्यक्रम, आई थिंक जैसा कि मैंने देखा है, सोचा है, in 1950 North American medical schools started conducting the activity to improve teaching of medical professions and considered first structured development program. The aims of this program: enhancing the academic and intellectual environment, to pursue research and to participate in seminars, conferences, workshops. Some topics such as research, teaching and administration, mentorship, leadership, skill development are concerned in
enabling lifelong achievement in this program. In this 8 days faculty development program, all the participants are benefited in many ways, such as how make faculty skilled in latest technology, help to integrate more technology onto their teaching, to orient the faculty to institutions' objective and vision, helpful to expand the faculty role, and in last, help the faculty members to find right work balance. It is very important factor really for the faculty. Right work balance means the lecture, the laboratory work, and the examination. All these three aspects we generally face in our academic sessions, and we have to satisfy to all our students by all three aspects. In last, I would like to thank Dr. Sanjeev Kumar ji, the principal of this college, who cooperated a lot to organize, to implement, to run this 8 days faculty development program. And I must say, with full strength, with full devotion, the leader of this program, the coordinator of this program, Dr. Garima ji, really did a lot, excellent, to run this program successfully. I again thanks to Dr. Garima ji and her team for the successful of this faculty development program at DAV College, Muzaffarnagar. Thank you very much. I just want to thank you, Professor Mukesh Kumar ji, our officiating principal today. And we want to really, you have cooperated very much today. And every time you are always with us to cooperate in the academic activities and personally too. Our principal, Professor Sanjeev Kumar ji, has joined our meeting because he was out of station due to certain reasons today. That was indispensable. So I would like first to tell you about the total sessions and total the brief summary of the program. The program was, the concept of the program to be conducted was from our college principal, Professor Sanjeev Kumar ji. He came to know from other sources that there is a program like that and it should be conducted in the DAV college too, because the number of new faculty has joined recently in the current session. So he asked me to conduct this program, and it could happen in September, starting from the January. Due to certain reasons, the EICT Academy has changed its policy, some guidelines. So that is why summer vacations in between exams, teaching, it could happen finally in September. So thanks goes to, the biggest credit goes to him, because he has said it should happen, and he asked me only to conduct this program. So, and I did it for his sake, that if he's asking me, प्रिंसिपल का तो ऑर्डर नहीं होता, इशारा भी ऑर्डर ही होता है. इस सेशन इसको हमने इस प्रकार से प्लान किया, उन्होंने, he has given us full freedom that in whatever way we want to do it, full support and non-interfering support was there. So that is why it could happen in the present form, whatever we asked for him and what
he has devoted the time, he has given full support, and he took full trust in it. So for all his cooperation and the cooperation of the technical team as well as the organizing team, including Professor Kuldeep Kumar, Dr. Sandeep Tripathi, Mr. Akshay Kumar, Shri Amit Kumar, Shri Sushil Kumar ji from Computer Department, Abhishek Bansal from Office, and Shri Vinay Pal ji, Accountant. All of them provided full support, and whatever they have done, whatever they have been asked to do, whatever they are expected to do, they all have done. In the 8 days program, totally 16 sessions were held, and the 18 speakers have shared their views on the possibilities and challenges in the implementation of the national education policy. The total participants got registered were 71. Out of the registered candidates, some candidates have also joined, participants have also joined the meeting, and they have been benefited with it. We are thankful to them also. And I will fail in my duties if I will not thank the non-teaching staff, especially class 4 employees who have supported all of us by arranging all the things and taking care of drinking water, tea and vegetables, etc. All the things they have taken care of. The flowers, the flower pots, and the neat and cleanness of this seminar hall, this all has been maintained by them. In Muzaffarnagar, though the power connectivity, power supply is not a big problem these days, but I'm almost daily, once there was a power cut. Today, as it was, I think it is 2 or 3 times, third time power cut. So they switched to the generator. A very big thank to all the team members. They have cooperated to the extent that whatever I expected, day, night, they have cooperated and they did their duties perfectly, beautifully. More than I asked, they have done. So with these words, I think our college principal, Professor Sanjeev Kumar ji, he's in the traveling to Muzaffarnagar, I think. So I would like to invite him also, as he has accepted our request to join on the way to. So I would like to invite him. Please say a few words in the valedictory, because it will be incomplete without your participation. Over to Professor Sanjeev Kumar ji. गरिमा जी नमस्कार। मेरी आवाज नहीं आ रही अब तक? कम आ रही है थोड़ी। हाँ, आवाज आ रही है। अब बोलिए। हेलो, आई आवाज अब? अभी आई है? आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। 1 मिनट, हम एडजस्ट कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक है। लाइट के जाने से अब आई आवाज? बिल्कुल सही आ रही है। लाइट के जाने से स्पीकर्स जो है कोई बात नहीं, अब नॉट इज वर्किंग। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कंटिन्यू ठीक है। प्लीज। गरिमा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। गरिमा जी नमस्कार। और ये आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा रहा। आपने जो इस प्रोग्राम को बुलंदी तक पहुंचाया, मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों ने बहुत मेहनत से अपने लेक्चर्स दिए हैं और रियली उनके लेक्चर से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने कॉलेज में जिस तरह का माहौल दे पाए, वो हाइब्रिड मोड में इस बार पहली बार DAV कॉलेज के इतिहास में ऐसा हुआ है कि हम ऑनलाइन बैठ के ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम का मजा लेते रहे और हमें जो है हर चीज सीखने को यही मिल गई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और पहली बार हमारी DAV कॉलेज में ऐसा हुआ है कि ये प्रोग्राम हमने किया है।
और इसमें सारा ही कॉलेज हमारा बधाई का पात्र है। हर आदमी का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, चाहे 3rd क्लास 4th क्लास, चाहे हम लोग हों, पूरा कॉपरेशन हर आदमी ने दिया है। मैं सभी का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितना भी अच्छा प्रोग्राम कर सकते थे, इससे भी अच्छा अभी इस स्टेज पे नहीं हो सकता था। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मेरा पर्सनली आज इस प्रोग्राम में रहने का मन था, लेकिन कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं जिनको कि हम भूल नहीं सकते। बहुत जरूरी काम था, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा। तो नहीं तो मैं आपके साथ आज वहीं पे रहता, और मैंने बहुत मिस किया है। खैर कोई बात नहीं, ऑनलाइन है आप, हम इस टाइम ऑनलाइन में बात कर सकते हैं आपसे। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। जो आपको मैंने कहा था 6-7 महीने पहले के एक प्रोग्राम आपको कराना है, वो आज आपने पूरा कर दिया। और मेरे कहने के अनुसार आपने हर काम को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और किस तरह से आपने पार्टिसिपेंट को बुलाया है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने सब कुछ एक सीक्वेंस की तरह से हुआ है। जैसे फिल्म बन रही हो, वही कंप्यूटराइज फिल्म को उस पे आपने पर्दे पे साकार किया है। रियली एक डायरेक्टर और एक को डायरेक्टर की भूमिका आपने पूरी निभाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे कॉलेज में आपने अपना पूरा का पूरा 100% दिया है, और अपनी टीम का आपने पूरा सहयोग लिया है, आपको सबने दिया है। मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो उसको मैं पूरी कर दूंगा। आप निश्चिंत रहे, बिना किसी टेंशन के आप काम कराया है आपने। आपको मैंने वादा किया, तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं आएगी, आप चिंता मत करिएगा। पूरी टीम कोई चिंता न करे, और हर काम आपने अच्छी तरह से किया। बहुत बहुत मैं एक बात मैं मिस कर गई थी। यस जो कहने के लिए प्रोफेसर जी। संजीव कुमार जी आपके, तो एज ए प्रिंसिपल आपका जो फुल हार्टेड सपोर्ट मिला है, उसके लिए तो हम सब थैंकफुल है ही। पूरी टीम जो जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई आपने सब तो पूरे किया, और खुले मन से पूरा किया कि किसी भी चीज में ये नहीं कि भाई एडजस्ट कर लो, ऐसी कोई बात आपकी तरफ से कभी नहीं आई। कॉलेज के लिए, कि जो कॉलेज के लिए काम हो रहा है, कॉलेज के अच्छे के लिए हो रहा है, कॉलेज की फैकल्टी के लिए हो रहा है, हमारे कॉलेज की क्रेडिट में एक अच्छी चीज जुड़ने जा रही है। इस स्पिरिट को आपने एविंस किया है, और हम सब इसी स्पिरिट से काम किया है। साथ में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पेशली जो लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से हमारे साथ रहे हैं, प्रोफेसर रीना मित्तल जी, प्रोफेसर संजीव कुमार जी बॉटनी वाले, कल्पना जी, प्रोफेसर अर्चना जी, प्रोफेसर कल्पना जी, वंदना वर्मा मैडम, रूही जी, अपूर्वा जी भी 2 बार मेरठ से आई हैं, डॉक्टर रेखा रानी जी लगातार हमें विज्ञप्ति जब पेपर में छपती है भेजती हैं, और यहाँ बनी रहती है, सजेशंस भी देती हैं, डॉक्टर सौरभ, चारू जी, प्रोफेसर मुकेश कुमार जी, मंजूषा जी भी इनॉग्रेशन में भी आई थी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम वर्क हमेशा मैटर करता है। बहुत अच्छे से सब लोगों ने कोऑपरेट किया है, और सब लोगों ने महसूस किया कि ये चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी जीत तो हमारी NEP की जो हमने कराया है FDP, यही है। हम सब लोगों को साथ जोड़ा है फिर से एक बार, और आगे भी हम इसी टीम भावना से कॉलेज के हित के लिए, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए कुछ और प्रोग्राम EICT की स्पॉन्सरशिप में कर पाए, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ।
और यदि कर पाए हम लोग तो वो बहुत अच्छा होगा। फिर से नॉन टीचिंग, टीचिंग पार्टिसिपेंट्स, टीचिंग स्टाफ, हर किसी का भरपूर सहयोग मिला है और प्रिंसिपल का तो फुल हार्टेड सपोर्ट है ही। तो इन सब के लिए फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को हृदय से प्रणाम कि एक जिम्मेदारी और बहुत अच्छे से पूरी कराई। मैनेजमेंट का भी सपोर्ट रहा हमेशा। वो लोग भी जब भी ऑनलाइन जुड़ने को कहा तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी समय निकाला। इवन हमारे वाइस चांसलर महोदय ने भी काफी समय देकर हमारे इसका इनॉग्रेशन को सक्सेसफुल बनाया, आने की कोशिश भी की थी। कुछ परिस्थितियां जैसे आज हमारे प्राचार्य जी के साथ रही, ऐसे उनके साथ भी कुछ मजबूरियां हो गई थी ना आ पाने की। सब चीजें सब लोगों का जो इसमें सहयोगी बना हमारा, उन सभी का हृदय से आभार और ईश्वर को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। आज की ये मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं। जिस पर पद से स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद।